सो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी करना है तो फॉरेन एक्सचेंज इज मैंडेटरी ट्रांजैक्शन जो भी है. सो दिस इज द डेफिनेशन अंडर द SEZ एक्ट. फर्स्ट कंप्लायंस हो गया आपका एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलओए. तो नाउ अभी आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फॉलो करना है क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है. तो सबसे पहला कंडीशन एलओए के अंदर क्या है जो आपने एक्सेप्ट किया है, दैट इज यू विल execute a bond cum legal undertaking. The unit shall execute a bond cum legal undertaking, जिसका शॉर्ट फॉर्म ब्लड बोलते हैं या BLUT बोलते हैं बहुत लोग. एलओ लेटर ऑफ अप्रूवल डीसी जो इशू उसका शॉर्ट टर्मिनोलॉजी इज एलओए. तो फर्स्ट कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने एक्सेप्ट किया उसका जो कंप्लायंस है दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट बॉन्ड कम लीगल अंडरटेकिंग. BLUT ब्लड भी बोलते हैं शॉर्ट टर्मिनोलॉजी. टाइम लिमिट क्या है? It is advisable कि immediately you should file because without execution of bond under rule number 22 no unit is allowed to avail any exemption, drawback, concession. It is permission to operate including the availing exemption, drawbacks and concession under rule number 22 of SEZ rules. Bhai, Yashpal here, I have a quick question for you. सर we can अभी कुछ यूनिट का रिक्वेस्ट है कि लास्ट में रखते हैं तो भी अपने लास्ट में ले लेते हैं. नो प्रॉब्लम. अगेन स्लाइड वापस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो प्रॉब्लम. हाँ, जैसे अभी ये फिजिकल फॉर्म में है, जैसे मैंने इनिशियल में बोला कि DCA रजिस्टर्ड ऑनलाइन, बट अभी एज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट 300 rupees stamp paper and all legalities is that, so they have agreed to accept the same in the physical format. As per the instruction issued by MOCI, स्टेट गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नोटरी होना चाहिए, एंड विद कवरिंग लेटर यू शुड सबमिट द सेम टू द डेवलपमेंट कमिश्नर. ये हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट होगा इनिशियली, देन लेटर ऑन जैसे ही वो आपका अप्रूव हो जाएगा, वेर इन द डेवलपमेंट कमिश्नर अप्रूव इन द सेंस द डेवलपमेंट कमिश्नर साइंस द बॉन्ड एज वेल एज द कस्टम ऑफिशियल साइंस द बॉन्ड, यू विल बी कम्युनिकेटेड द अप्रूव्ड कॉपी. ओरिजिनल डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस में रहेगा with them. You will get a scanned copy that has to be uploaded in the SEZ online system बाद में. Anybody wants to understand value, or we can skip this part? Prakash, just one question. Clear. I think in the portal SEZ portal उसमें बोलते हैं कि आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑनलाइन BLUT के लिए. तो एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वही मैंने बोला, पहले फिजिकल कॉपी आपका अप्रूव होगा, देन वो एक्सेप्टेड कॉपी हैज टू बी अपलोडेड ऑन द SEZ ऑनलाइन सिस्टम. ठीक है, ओके फाइन. सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके अंदर एक वैल्यू होता है उसका मॉनिटरिंग. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिट. अगर शॉर्टफॉल हो रहा है देन यूनिट हैज टू अगेन सबमिट एन एडिशनल बॉन्ड, सेम प्रोसेस, फिजिकल करना है एडिशनल बॉन्ड एंड बाद में अपलोड कर देना है अपडेट LUT में. जो पुराने हेलो हाँ सर, उनको जब whenever they are doing first time it will come in new LUT, then when they are updating then it will come in update LUT. यस, एडिशनल बॉन्ड जो भी करना है उसका अलग मॉड्यूल है. फर्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो मॉड्यूल अलग है. फर्स्ट टाइम कर दो तो इट इज न्यू LUT सिलेक्ट करना है आपको मेकर आईडी से, एंड देन व्हेन यू सबमिट an additional bond then it is an update LUT. सर ये हेलो, हाँ बोलिए सर. हाँ सर, ये BLUT जब एग्जीक्यूट करवाते हैं फिजिकल वाला DC के साथ से, उनको सपोर्टिंग देना पड़ता है कुछ वर्किंग का या एनी अदर डॉक्यूमेंट लाइक दैट? किस बेसिस पे वो कैलकुलेट वैल्यू का कैलकुलेशन जो है कैसे यू हैव अराइव्ड विद द वैल्यू, दैट कैलकुलेशन बैकअप कैन बी गिवन टू द DC ऑफिस. यस, वो देना है क्योंकि ऑनलाइन के अंदर भी आपको वो डालना होगा. जैसे वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो आपको एग्जेम्पशन लेना है वो आपको मेंशन करना है. कितना इंडिजिनियस गुड करोगे, इंपोर्ट कितना करोगे, इंपोर्टेड सर्विसेज कितना रहेगा, इंडिजिनियस सर्विसेज कितना रहेगा, एंड कितना रेट ऑफ ड्यूटी है, कितना एग्जेम्पशन आप लोगे, उसका एक बाइफर्केशन कैलकुलेशन आपको उसमें अटैच करना है. जो आपने दिया है यूनिट ने, दैट पुराने मॉड्यूल में नहीं था, अभी नया जो मॉड्यूल है उसमें है. फॉर ओल्ड यूनिट दे कैन गो एंड अपडेट द सेम इन द BLUT लेडजर.
ओके सर, और ये जो है वो मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years के लिए होगा या 1 साल के लिए होगा, किस हिसाब से होगा? इंस्ट्रक्शन नंबर 72 स्पेसिफाइज दैट इट इज अप टू द यूनिट के वो 1 साल का दे रहा है, 2 साल का दे रहा है, 3 साल का है, 4-5 जो भी है आपके ऊपर है। अच्छा। मॉनिटरिंग यूनिट को ही करना है, उसी को सब कुछ मेंटेन करना है। जैसे ही शॉर्टफॉल होता है तो यूनिट को ही एडिशनल सबमिट करना है, सब यूनिट का उसमें आता है स्कोप में। तो ओके इट इज एडवाइजेबल कि 5 साल का हायर साइड में दे दो, सो दैट आपका नॉट शॉर्टफॉल अगर आप भूल गए कि फॉरगॉट टू मेंटेन दैट मेरा कितना डेबिट हो रहा है ड्यूटी फ्री गुड्स एंड सर्विसेज, तो हायर साइड में यू आर सेफर टू हैव अ हाई वैल्यू। ओके। और सर जैसे अगर हमारा मतलब रिसेंटली हमारा ऑफिस एड्रेस चेंज हुआ था, तो उसके लिए वी वर बीइंग टोल्ड दैट वी हैव टू फ्रेशली फाइल फॉर दिस BLUT अगेन, तो वो Because केस में again, कैसे? because the reason being that the new unit will also be having the exemption, उसके ऊपर भी आप exemption लोगे, and that again हाँ मतलब not only एंटिटी तो हमारा वही है, खाली एड्रेस चेंज हुआ है हमारा। एड्रेस चेंज हुआ, जो नया प्रीमाइसिस है आप उसके अंदर कुछ फर्नीचर करोगे, फिक्चर्स करोगे, हाँ, हाँ, इंटीरियर करोगे, हाँ। ड्यूटी फ्री प्रोक्योरमेंट, लाइट लोगे, फिक्चर्स लोगे, एसी लगाओगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगेगा, टेलीफोन लगेगा, सब ड्यूटी फ्री आएगा ना, तो उसका भी आपको एक बॉन्ड देना है वो प्रीमाइसिस का भी। हाउ द डीसी विल मॉनिटर दैट आपका 2 प्रीमाइसिस है कि 1 प्रीमाइसिस है, और एक प्रीमाइसिस ने आपने बॉन्ड दिया, दूसरे पे बॉन्ड नहीं दिया, और आपने उसमें नॉन कंप्लायंस किया, तो उसका लीगल अंडरटेकिंग कहाँ है? तो दैट इज द रीजन, जो भी नया प्रीमाइसिस होता है उसका एक एलयूटी आपको देना है। ओके, और और सर वो भी अगर सर सेम एडिशनल प्रोसेस से स्पेस फाइल होगा? सेम प्रोसेस, यस। सर एडिशनल स्पेस होगा तो भी से वी हैव टू डू सबमिट एडिशनल बॉन्ड। एडिशनल बॉन्ड नहीं, नया बॉन्ड आएगा, उसके अंदर प्रीमाइसिस आपको जो भी है आपके वो डालना है, एंड उसको फिर अपडेट एलयूटी में फाइल करना है। Prakash, इट विल बी अ न्यू can I, बॉन्ड। this is Alok Mathria from 314 Capital. Prakash, just one suggestion. This rule again, I think, is one of those that follows from a more of a manufacturing perspective, and realistically speaking, from a unit perspective, doesn't make sense नहीं, for a मैन्युफैक्चरिंग financial यूनिट में unit. अरे नहीं आलोक जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चेंज ऑफ प्रीमाइसिस होता ही नहीं है। वो तो एक जगह प्लॉट ले लिया तो वही में रहेगा, वो प्लॉट थोड़े चेंज करेगा, वो एक्सपांड करेगा। ये खाली सर्विस यूनिट में प्रॉब्लम आ रहा है कि वो दे कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम इधर से इधर, उधर से उधर होते रहता है। मैन्युफैक्चरिंग में I होता ही get नहीं है that. चेंज। So why is this specific to my address and not specific to the entity itself? This just adds documentation for funds. सो टू मॉनिटर द ड्यूटी फ्री गुड्स कहाँ पे गया, किधर। मेरा GST number. See, this is linked to my GST number, which is not changing. If you go to see Prakash ji, can Prakash ji, कमिंग टू Prakash जीएसटी, ji, या अच्छा याद दिलाया आलोक जी, जीएसटी में to भी answer आपको his अपडेट question, करना है। yes, GST additional में place भी of अपडेट business करना है। आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। I बिल्कुल, understand GST that. में, yeah, I understand that. So I am making a modification to say that I have an additional place, or even if I've changed my address, why are we creating a fresh bond for the new place? Why can I not just add that new place onto the existing bond? Is my question. जैसे फॉर एग्जांपल नीरव मोदी ने एक स्पेस लिया एसईजेड में, Mhm. उसमें 500 करोड़ का घपला किया, और अगर एलयूटी नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगा उसको? It will still be linked to the same GST, right? No, it has to be an undertaking under the SEZ Act. You will be complying with all the rules and regulations, follow all the rules and regulations. Not only the exemption, other rules and regulations are also required to be followed. तो एक पूरा आप if you go through the bond, सब conditions है, various conditions आते हैं। You will maintain records, ड्यूटी फ्री गुड्स आपने जो भी प्रोक्योर किया उसका पूरा आप रिपोर्टिंग करेंगे। यू विल सबमिट एपीआर, यू गिव एन अंडरटेकिंग दैट यू विल सबमिट ऑल द रिपोर्ट, वो जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर पूछेगा। बहुत सारे कंडीशन आई मतलब वो बाद में डिटेल में आप आ जाना, डिस्कस करेंगे। वी मूव टू द Fair नेक्स्ट enough. स्लाइड, Fair बहुत enough. टाइम। Yeah, sure. I won't take up time. तो कमिंग, हाँ सर, तो एफएक्यू इसमें लास्ट में रखते हैं सर, एफएक्यू लास्ट में रखते हैं, एफएक्यू लास्ट में रखते हैं। सर Prakash, I think you have gone on mute. Sorry, space bar दब गया, fine. So
eligibility certificate, which is a mandatory for availing stamp duty exemption under the Gujarat SEZ Act. The power has been delegated to the development commissioner for a single window concept. You don't have to go to the state government. You have to apply to the development commissioner. This can be done with the covering letter which you submit for BLUT bond. Or parallelly, after acceptance of bonds also, unit can also request for issuance of eligibility certificate under the Gujarat SEZ Act. Okay, lease deed next is first हो गया आपका acceptance LOA bond हो गया, bond के बाद eligibility certificate. Now you will be executing lease deed. Lease deed के लिए 6 महीने का time है for unit to submit self attested copy registered of a registered lease deed. अगर नहीं किया है, unit are requested to submit an extension for time limit under the rule 18(2). Lease deed is required to be not uploaded. वो मॉड्यूल भी है नहीं. नीरव जी फ्रॉम एनएसडीएल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, फिर से रिपीट कीजिए वो. बोलिए सर. अपलोड का ऑप्शन आया क्या? लीज डीड अपलोड करने का अभी नहीं हुआ ना? इट इज अंडर प्रोसेसिंग सर. इट विल बी हैपन विद इन मैक्सिमम विद इन 1 month. ओके फाइन. तो कई यूनिट क्या करते हैं सर, यूनिट डिजिट 6 महीने में अपलोड नहीं करते और उसके बाद दे आर ट्राइंग टू गो फॉर एलो एक्सटेंशन. वो नहीं हो पाता है बिकॉज यूनिट डिजिट पर एलो एक्सटेंशन का सिस्टम में फाइल नहीं कर सकते, ऐसा रूल है. राइट. ओके, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिंपल कवरिंग लेटर आपको देना है, एड्रेस टू द डेवलपमेंट कमिश्नर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ बॉन्ड और अलोंग विद द बॉन्ड ऑल्सो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो. ओनली अ लेटर इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड. फिजिकल है, दिस इज नॉट ऑनलाइन. ये खाली फिजिकल देना आपको. ओके, जो पुराने यूनिट्स है या जो भी यूनिट्स है इन विच LOA, in whose LOA there is a condition mentioned that that this LOA will come into effect only after your IFSC approval is submitted to the DC office. For those units, they are requested to please submit the IFSC approval to the development commissioner office at the earliest. अगर नहीं किया है तो. और जो भी न्यू अपकमिंग यूनिट्स हैं जिनका IFSC अप्रूवल आने वाला है, भले LOA के अंदर कंडीशन नहीं लिखा है, बट इट इज एडवाइजेबल दैट दे शुड सबमिट a copy of your IFSC approval to the DC office, because जब आप वो commencement के लिए when the unit goes, the DC will raise a query that please submit the copy of IFCA approval. एप्लीकेशन साइड दिखाइए ना, उस लीज डीड वाला क्या बोल रहे थे वो मिस हो गया. आप उसी चीज से, इसमें आप क्या बता रहे थे? कोई भी यूनिट है उसको 6 महीने के अंदर लीज डीड सबमिट करना है, कॉपी ऑफ लीज डीड टू द DC ऑफिस. फिजिकल कॉपी है. यस, ऑनलाइन में अभी ऑप्शन 1 महीने के अंदर हो जाएगा. वंस इट इज लाइव यू कैन अपलोड द सेम इन द SEZ ऑनलाइन आल्सो. बट देयर इज ऑनलाइन के अंदर एक है कि आपको वहां पे लीज डीड का डिटेल्स अपलोड करना है, उसके तो ही द सिस्टम विल मूव अहेड, अदरवाइज नॉट. थ्रू अप्रूवर आईडी ओनली, नॉट फ्रॉम मेकर. थ्रू अप्रूवर आईडी ओनली. हाँ, अप्रूवर आईडी में ही ऑप्शन है, मेकर में नहीं है. प्रकाश जी, प्रकाश जी आप 30 डेज बोल रहे हो, लेकिन 30 डेज में तो GST नहीं आता है. विदाउट GST ये लीज लाइन लीज एग्रीमेंट साइन नहीं होता है. 30 डेज में 6 मंथ्स. यहाँ पे डेवलपर 6 महीने तक लीज डीड अमेंडमेंट ये एग्रीमेंट का टाइम नहीं देता है. ऐसी GST अपने आप में 3 महीने का प्रोसेस है, 2 से 3 महीना लग जाता है. तैयार नहीं है प्रॉपर्टी, अगर तैयार नहीं है तो लीज एग्रीमेंट नहीं हो सकता. लीज एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो मतलब पहले तो डेवलपर का लीज आपके साथ होना चाहिए एग्रीमेंट, गिफ्ट के साथ एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही वो हमारे साथ लीज साइन करेगा. तो 6 months इज अ वेरी अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम टू बी एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू बी डन. और सब कुछ लिंक है ना, बिना GST के वो लीज डीड नहीं होता है. और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो लीज डीड हो ही नहीं सकता. PLO के बेसिस पे ही आई थिंक व्हेन वी शुड बी अलाउड टू सबमिट दिस एप्लीकेशन एट द कमेंसमेंट. We have requested a GST authority. In there are 2 sections. One is central government, one is state government. State government बिना lease deed के कर देता है. Now it has been observed that central government also without lease deed they are accepting the application and processing the GST applications. Coming to part of the developer side जिसका premises ready नहीं है, तो I would suggest you to go with a developer, a co-developer which is having the premises ready and who is able to give you the execute the lease deed.
That will increase the cost of doing business, because then we are paying rent on double the amount. And Prakash ji, it appears more like, you know, the SEZ office or the gift SEZ office, instead of trying to make things easier for the members who are being invited to be there, you're actually creating more hurdles and becoming a lot more stringent. You're not facilitating the move for us. Sir, आप concept, can you give an example कौन sir co-developer जिसने मना किया है? There are quite a few. You can look around. There are more than 28 buildings under construction, and none of them have a completion deadline of within 6 months. And I don't think that's a very realistic timeline. जब आप application करते हो ना, when you apply to the DC office, a PLO is mandatory. PLO We understand a PLO is mandatory, but what you are failing to understand is that there are 1,001 variables that can cause the completion of a building to be delayed. If the premises completion is delayed, for all you know that the developer who's making the builder tends to, God forbid, happens to have an accident on site which can cause a delay. There could be multiple reasons. And you are not allowed to have a PLO जिसका building completion नहीं है. आप don't do any transaction with such co-developer. आपको नहीं करना है. आप PLO ले मतलब वो issue नहीं कर सकता PLO. Provisional letter of allotment can only be issued by a co-developer when his premises is ready. So approved units. But see, the gift office is not giving us these clear guidelines. The gift office is not giving us these clear guidelines. And when we arrived here, our understanding was that the gift IFSC office is in place to actually make the transition easier for us. The government wants us to be here for the benefit of, like, it's a two-way relationship. It's not a one-way relationship. But it does not appear that the gift office is trying to make things easier for the members. Okay, let us have a one-to-one discussion with the IFSC team and other teams. आप एक mail drop कर दीजिए. But again, Prakash ji, you're not giving your mobile number or any of your contact details to have a one-to-one appointment with you. बिल्कुल सर, लास्ट स्लाइड में मिल जाएगा. अगर आप गूगल में टाइप करोगे prakash.thakur@gift, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब आ जाएगा. You have to just type my name, prakash.thakur@gift, आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा. Prakash ji, good afternoon. I have one submission to make here. See, basically, when we have to take the PLO to from the developer, these developers, see, because when a mutual funds, when you're launching this, AIFs, the funds launch करना है, so हर fund के लिए एक PLO लेना है, तो this developers are charging us additional. Right. The issue was discussed in the open house, and the co-developer were instructed to not to. मतलब वो एक हार्दिक भाई भी थे. I don't remember कौन से unit है. I think many units were there in that meeting. So कल ही open house, the same can be discussed. You can discuss the same with the DC also. Development Commissioner को आप भी आप बोल सकते हो. ये point already discuss हो चुका है पहले. And वो developer को instruction गया है कि that they should not charge anything additional like that to issue a PLO. Verbally उन्होंने request किया था, पर development commissioner ऐसा मतलब developer को मना भी नहीं कर सकता कि you don't charge. But then obviously that our cost की बढ़ जाएंगे. They are not listening. So what do you have some office space where no one is sitting there? So again, there is an open house. रोनक जी से आप link share ले लीजिए. वो आपको बता. The same can be discussed in the open house tomorrow. 2 बजे है. The link can be provided by रोनक जी. Okay, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Sir, what are the consequences if the lease deed is not submitted in 6 months? And failure to do so लिखा हुआ है स्लाइड में. The approval committee में नहीं ऐसा होता नहीं है, जो कि आज तक 1 साल तक मतलब मैंने यूनिट 2 साल तक नहीं किया है. ऐसा कोई एक्शन लेता नहीं, पर रूल में लिखा है कि मे विथड्रॉ LOA आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफ बीइंग हर्ड, जो कि अभी गिफ्ट में नहीं है. ये केस इज नॉट एप्लीकेबल इन गिफ्ट, मतलब किया नहीं है. दिस इज नॉट सो स्ट्रिक्ट ऑन दिस. खाली एक्सटेंशन ऑफ LOA के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा कि इफ यू आर नॉट हैविंग द प्रीमिसेस, द DC मे आस्क व्हाई द लीज डीड वाज नॉट देयर. And if you see the agenda and minutes, many cases may they have asked the reason why lease deed was not executed.
Sir, Neeravji made a statement saying that LOA extension cannot be done without lease deed. What happens to those units which had gotten the temporary address of Aspire and then wish to execute the lease deed with one of the co-developers now? So do we first do change of address? How do we do this lease deed without affecting the change of address, and then change of address cannot happen without extension of LOA? Neeravji, would you like to answer this question? Yes, can you repeat, sir, question? So in the case of those units which had initially, registered on the temporary premises provided by GIFT, which was in Aspire 3 co-working desk, they, for those units, unka jo lease deed abhi ban raha hai with one of the co-developers, and their LOAs may have expired or on the verge of expiry. So we are in a catch-22 situation where we cannot apply for extension without a lease deed. We cannot execute the lease deed because the lease deed is on a different address than what was originally provided on the PLOA. So in that case, how do we go about doing it? What would be the sequence of events? Okay, sir. In that case, you need to contact, you need to submit one application from Maker ID and request DC office to give you temporary LOA extension. In that case, the DC has right to give you temporary extension, and then when you get all the thing, you can update the same in system also, sir. Got it. Thank you very much. Okay. Neeravji, I'd like to ask you one question. जब BLUT के लिए we had applied with the DC office on SEZ online portal, they were asking for lease deed. But I guess first BLUT will be issued and BLUT and certificate of eligibility, and then we have to enter into lease deed. Yes, otherwise, otherwise तो stamp duty वगैरह लग जाएगा फिर उस पे. बिल्कुल, absolutely right. Agree, sir. That answer can be given by DC only, sir. So जो भी है कल you can come up with the same issue in the open house schedule tomorrow at 2 o'clock. रौनक जी से आप link ले लीजिए. It is online mode and we can discuss. I think clarity, some miscommunication is there. Clarity हो जाएगा कल. Okay. Thank you. B1011 कर सकते हैं. So we move to the next slide. Just one quick clarification. ओपन हाउस में IFSC अथॉरिटीज होंगी. IFSC अथॉरिटीज में से कोई होगा? ओपन हाउस में नहीं, नॉट इन ओपन हाउस. तो क्योंकि FIF के बारे में थोड़ी क्वेश्चंस थे इसके लिए. नहीं, ओपन हाउस में यूजुअली यू कैन, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको पहले डीसी ऑफिस को कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट करना होगा, तो ही वो दे विल इनवाइट द आईएफएससी अथॉरिटी. अदरवाइज जो करंट जो हर बार होता है उसमें नहीं होता. नहीं, मेरे को नहीं करना है, तो डीसी ऑफिस को कर दीजिए. ओके सर, डीसी ऑफिस में मेल कर. So we move to the. Sorry, Prakash, just one last question linked to my previous question. When you said temporary LOA extension, do I have to use the LOA extension module or do you use freeform for this? Can you repeat? When Neeravji said to use temporary LOA extension, so do we need to use the LOA extension module or freeform module to make this application to the DC office? टेम्पररी नहीं, नीरव जी इनका कैन यू आंसर द क्वेश्चन? टेम्पररी नहीं होता, एक ही होता है. एलओ एक्सटेंशन नहीं फाइल करना. टेम्पररी डीसी के पास राइट होता है, दे कैन डू इट फ्रॉम व्यू एंड एडिट एंटिटी डिटेल्स फ्रॉम देयर लॉगिन एंड दे कैन गिव टेम्पररी एक्सटेंशन अप टू 30 डेज मैक्सिमम. एक्सटेंशन है. अच्छा, बैकएंड अमेंडमेंट बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस. गॉट इट. आलोक जी, आप डीसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट ये जो करंट डीसी है ना, वो बैकएंड अलाउ, मतलब ही इज नॉट इन द फेवर ऑफ अर्लियर जॉर्ज सर और पुराने डीसी में होता था, बट ये करंट डीसी मना करते हैं बैकएंड अमेंडमेंट. should I be using LOA extension module or freeform module for this application was the only question. LOA extension है तो LOA extension ही आएगा, freeform नहीं आएगा सर. LOA extension will be for 1 year and temporary election it for 30 days, but that can DC can do from backend, or if you want you can file application also. It's up to you. You can request for backend amendment, but I don't think so वो करेंगे अभी. I'll take it up tomorrow, Prakash ji. I'll take this up. એમનો ક્વેશ્ચન એ છે કે સપોઝ ટેમ્પરરી એમને કરવું હોય તો ફ્રી ફોર્મ માં જઈને એપ્લિકેશન કરે કે પછી LOA એક્સટેન્શન નું જે અલગ મોડ્યુલ છે એમાં જઈને કરે? ફ્રી ફોર્મ માં ટેમ્પરરી અમેન્ડમેન્ટ રિક્વેસ્ટ એટલે બેકએન્ડ to answer your question, yeah. ठीक है. I think I got it. I'll still clarify in tomorrow's meeting. Thank you, Prakash ji. Thank you, Neeraj. Okay.
So for the new units who wants to start their construction activity, नया premises ले लिया आपने, and for sand that it is a restricted item, so approval is required. Earlier it was given by the BOA, but there was a huge time taken for giving the approval, more than 2 months and above. So they have delegated the power to the development commissioner, and the development commissioner is now authorized to give you the permission. Unit has to just submit a request letter along with the chartered engineer certificate for the quantity required, and the same physical mode में है, and the DC can approve the same on physical mode. RCMC which is आगे, हाँ अभी आपने सबसे पहले देखा acceptance of LOA bond हो गया. Rule number 22 के अंदर it is also mandatory. There are two conditions. Non-compliance of two condition means you are not eligible to get any exemption, concession, drawbacks और जो भी है. First condition था execution of bond. Second condition is RCMC certificate from EPCS जो अभी current slide में आपको दिख रहा है. It is mandatory for all the unit to obtain the same, and it is online on DGFT portal पे है, not EPCS. It is on the portal of DGFT. वहां से आपको अप्लाई करना है ERCMC. एनी अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे रवि पिल्ले सर है प्लस नवीन जी है, पेमेंट रिलेटेड अगर कोई क्वेरी तो नवीन जी विल बी एबल टू हेल्प यू. यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रवि जी इधर ही है लोकली. He can come to your office. अभी एग्जिम बैंक में आए थे और उन्होंने उनका ये करवा दिया था RCMC का. तो it is mandatory, all units are requested to get the same. क्या नाम बोला? एक तो रवि पिल्लई जी का नाम बोला, दूसरा जी सर, और नवीन सक्सेना फॉर पेमेंट रिलेटेड है. Anybody who wants, you can text me, WhatsApp कर दीजिए, पिंग कर दीजिए. I will provide you the number of रवि जी. So it is like this, यहाँ से करना है आपको, and they have requested all the units to pay payment in Indian rupees because their bank is not accepting in foreign exchange, वो reject हो जाता है. This is how certificate is there. ये हमारा gift SEZ Limited का है. This type of RCMC we issued. Renewal का notice आ गया है. Now they have also issued a circular that any unit who wants to go for 3 year, then 3 year का membership मिल जाएगा उनको. Earlier it was 1 year. We have already discussed this. We skip this. SEZ online नीरव जी का अलग से ट्रेनिंग सेशन करना तो कर सकते हैं. IceGate is mandatory now, and in future all that SEZ online transaction may be shifted to IceGate. So it is mandatory. All you need to get the IceGate registration. This is the notification for exemption for import of services. उसके बाद नीचे जो है procurement of services for BTA. There are 66 services which is allowed. And some of the services we have got it approved. अगर उसके अलावा कोई services you required, first you have to apply to the development commissioner office. It will be put up in the approval committee. Upon approval by the approval committee, then only the unit is eligible for exemption to procure the services from DTA. Within SEZ transaction, the clarification is issued by the GST department, wherein it says that it is derogated and any both the units. It is advisable कि जो भी units है, जो unit to unit transaction करते हैं within SEZ and जो भी other SEZ के साथ में, LUT is mandatory under the GST regulation. SEZ में तो है ही है, under GST also LUT is required to be executed. स्पेस पर हो गया. So custom endorsement is mandatory for duty free goods जो भी procure किया है, and the same has to be filed within 45 days. Similarly services का भी it is requested कि आप file कर दो जो भी आपने DTA से services लिया है. For services it is DSPA portal to be filed in the SEZ online system, and for goods it is DTA procurement to be filed for endorsement of customs. Identity card
अभी फिजिकल मोड में है. एवरी यूनिट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर और स्पेसिफाइड ऑफिसर. अभी द लोकेशन हैज चेंज. नाउ द लोकेशन इज एस्पायर 3 कस्टम हाउस. यहाँ पे गिफ्ट हाउस के बाजू में कस्टम ऑफिस एस्पायर 3 बिल्डिंग है. वहाँ पे विकेश जी बैठते हैं. वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, वहीं से आपको कलेक्ट करना है अभी. एंड मार्च इट विल बी ऑनलाइन. Sir, So I have a again, query here. हाँ, This is Sandeep Shop, that's all. I have already applied for the ID card, though at the time of collection of the ID card, it is communicated to me that I need to apply online only and no more further ID card is being issued offline. राइट. तो उसमें क्या हुआ है कि इट वाज अप्रूव्ड आल्सो, बट द प्रिंटिंग में थोड़ा इशू हो गया. तो प्रिंटिंग का भी 1 मार्च तक वो लाइव हो जाएगा. द बग विल बी फिक्स्ड विद इन 1 मार्च. तो प्रिंटिंग का जैसे ही लाइव हो जाएगा वी विल शिफ्ट टू द ऑनलाइन. सो अगेन इट इज नाउ अलाउड मैन्युअली. तो आपको मैन्युअली इशू हो जाएगा. But sir, I have already applied manually. My application has been submitted. ठीक है. It तो has मैं been signed and आप मेरे everything. को बाद में कॉल कर लीजिए. आई विल चेक विद द कंसर्न पर्सन एंड लेट यू नो कहाँ पे स्टेटस है. मुझे कॉल भी आया था वहां से. He has clearly said you just need to come and collect it. जब मैं कलेक्शन के लिए गया, he denied to give me the ID card. He said like it is now stopped and you need to apply it freshly on online. हाँ, तो वो पहले की बात है. नाउ दिस इज 2 दिन पहले. अभी दिस इज अपडेट ऑफ लास्ट 2 डेज. सो ऑनलाइन वाला प्रिंटिंग में टाइम लगेगा. तो अगेन वी हैव स्टार्टेड द फिजिकल इश्यूएंस ऑफ आई कार्ड. तो मैं आई विल चेक. आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए. मैं आपका आई कार्ड इशू करवा देता हूँ वहां से मिलके. Thank you. ओके. सो लेट अस चेक जो हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट ऑथराइज सर्विस एक्टिविटीज अलाउड, जो हम बोलेंगे उसको ऑथराइज ऑपरेशन. वैलिडिटी ऑफ एलओए इट इज फॉर 1 ईयर. जिसका वैलिडिटी एक्सपायर होने वाला है, इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल 2 महीना पहले ही आप अप्लाई कर दो. सो टू अवॉइड एनी सम स्टॉपिंग ऑफ वर्क और एनीथिंग जो भी है. एक्सेप्ट ऑन टर्म्स एंड कंडीशन विद इन 45 डेज कैन बी डन इन बेल ऑल्सो. अगर आपका सिस्टम लाइव नहीं है, जो हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम जो आ रहे हैं मेनी यूनिट्स को. बॉन्ड फिजिकल मोड पे है, ऑनलाइन नहीं है. आफ्टर एक्सेप्टेंस दैट हैज टू बी डन इन एसईजेड ऑनलाइन मॉड्यूल. Separate GST registration is required as an SEZ unit under GST. It is a compliance under GST regulation. So make sure that separate GST is there. क्योंकि many units ने जो initial level पे जिसका GST नहीं आया है, तो they have made payments from other GST and they have been charged with the tax. Eligibility certificate discuss हो गया. Approval of list of services for zero rate supply 66 services. And अगर आपको कोई और चाहिए तो you have to apply to the DC office for DT procurement of services. RCMC already discussed. IEC हो गया. Endorsement of winners by Customs Authority for duty free goods and services. Duty paid है तो आपको खाली उसमें एक स्टैम्प लगवाना है without availing any exemption when you bring the material. जो goods आएगा उस टाइप पे goods के लिए it is applicable to goods only. Monitoring of bond unit का responsibility है. अगर shortfall है तो you have to execute additional bond. ID cards of employee अभी फिजिकल हो गया है. अगेन वी हैव मेड इट लाइव. ऑनलाइन मार्च में हो जाएगा. तो एनी क्वेरी नाउ वी कैन डिस्कस, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स. प्रकाश जी, मेरा एक क्वेरी है. शिवाशीष जी सर बोलिए. पहली बात तो 2 कंफ्यूजन है मेरे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने एडिशन ऑफ स्पेस के लिए बीएलयूटी ऑफलाइन एग्जीक्यूट कराया है, सो जो ऑनलाइन आप बोल रहे हो कि बीएलयूटी ऑनलाइन सबमिट होगा, वो व्हाट इज हुज रिस्पांसिबिलिटी इज दिस? यूनिट का? और अगर यूनिट का है तो फिर किसके आईडी से होगा सर वो बीएलयूटी सबमिट फॉर द एडिशन ऑफ स्पेस? एडिशन ऑफ प्रीमिसेस का फिजिकल होने के बाद में आपको उसका ऑनलाइन एंडोर्समेंट एक्सेप्टेंस मिलेगा. दैट यूनिट हैज टू सबमिट फ्रॉम देयर लॉगिन आईडी. जिसका उसका एक अलग मॉड्यूल है, दैट इज अपडेट एलयूटी, जो हमने डिस्कस किया. उसके अंदर जब आप करेंगे एडिशन ऑफ प्रीमिसेस के लिए तो इन दैट यू हैव टू फाइल अपडेट एलयूटी. एट द फर्स्ट टाइम यू फाइल न्यू एलयूटी एसईजेड पोर्टल ओनली ना? इन द एसईजेड पोर्टल. हां, तो ये यूनिट की रिस्पांसिबिलिटी है, यूनिट को फाइल करना है. मेकर और अप्रूवर? मेकर. ओके. एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज जो एलओए होता है, द एलओए, so acceptance of LOA can be done through maker only, right? नहीं, अप्रूवल.
अप्रूवर एंड सो एडमिन एंड अप्रूवर्स, सो मेकर एंड एडमिन से कोई भी सारा नहीं होता, सब एवरीथिंग इज बी डन थ्रू अप्रूवर ओनली, राइट? VLUT एज वेल एज LOA, राइट? हाँ 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 हाँ। तो मेरा तो अभी बैटरी लो हो रहा है, नीरव जी अगर फ्री है तो ही कैन टेक अ सेशन फॉर क्रिएशन ऑफ आईडीज। मेरे ट्रेनिंग सेशन के बाद में ही विल एक्सप्लेन यू कैन स्टे ऑनलाइन। अभी आप रहिए। प्रकाश जी, हाँ प्रकाश जी, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू वो जो जीएसटी था, तो वो जो आप चेकलिस्ट दिखाएंगे ना, आप चेकलिस्ट दिखा रहे थे, हाँ, इसमें ये जो जीएसटी है, बाद ही जीएसटी आएगा ना? बाद भी जीएसटी अप्लाई होगा ना? It is of SEZ category only, sir. Not non-SEZ नहीं चलेगा. It should be of SEZ category only. There are two type of GST. One is non-SEZ, one is SEZ. You require to procure SEZ category वाला GST only. सही बात है. My question is, I will apply for GST only after the acceptance of BLUT. नहीं सर, GST is under GST regulation. SEZ BLUT is under the SEZ regulation. Both are different regulation. Okay. So GST आप LOA जैसे इशू हो जाता है, immediately you can apply. Got it. Fine. It is not interconnected. Got it. Fine. Prakash ji, I have a quick question on the fees we pay for SEZ 5,000 fees which we pay. How can we receive the invoice? Because whenever we write to NSDL for the invoice, they do not respond back. We need invoice for accounting. अरे सर वो 5,000 DD वो is not to NSDL, it is to the new unit application की बात करो ना आप। हाँ, SEZ पे जो आती है ना पोर्टल पे 5,000। प्रकाश भाई AMC फी वो मिल जाएगा। नीरव जी प्लीज आंसर। हाँ सर, हम लोग 25,000 और प्लस 5,000 दोनों का इन्वॉइस देते हैं। आप एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं मिला तो आपका यूनिट का नाम और एंटिटी मुझे मेल पे भेज दीजिए। आई विल हेल्प यू विद इन टुडे ओनली सर। ओके, थैंक यू। ओके, you not done my mail ID. Nirav ji, otherwise what is the way? You directly issue after after receiving the payment. जैसे कि suppose आपने फरवरी में पेमेंट किया तो that invoice will get. I'm not sure. So, हेलो सर, एक मिनट, let me speak first, then you talk. अगर आपने फरवरी में पेमेंट किया तो that invoice you will get before 15 March on your registered admin ID. अगर नहीं मिलते then it will be auto generated email invoice that you will get on your registered mail ID of admin before 15 of next month. जैसे कि फरवरी का 15 मार्च का 15 अप्रैल से पहले मिल जाता है invoice. We create invoice on monthly cycle basis. Yes. Got it? Okay. Got it. Yeah. Hello, Prakash ji. Just a quick question. Am I audible? Yeah. Hello. जी सर बोलिए। Am I audible, Prakash ji? हाँ सर बोलिए। So my query is, yes sir, my query is with respect to GST certificate for ancillary services. The law firms who are intending to set up office in SEZ. Sir, it is. Are they also required to obtain a separate? Yes, sir. Reason being that under section 20, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। You are as an SEZ unit, it is mandatory. So there is no relaxation given for SEZ unit. Because, sir, like, my confusion is because the lawyers, because the law firms fall under the reverse charge mechanism, they are not required to pay GST. Sir, when you are approved as an SEZ unit, then the laws applicable to SEZ units are applicable under GST regulation. So अगर आप as a lawyer, individual lawyer नहीं हो यहाँ पे, you are an SEZ unit under the SEZ regulation, and GST regulation says if you are an SEZ unit, you have to take a GST registration. Okay. हेलो प्रकाश जी, Can I? जी सर। हाँ हेलो बोलिए सर। मैं सौरभ बोल रहा हूँ सर। हेलो हाँ बोलिए। सर मैं बोलूँ क्या? हाँ सर। सर मैं सौरभ बोल रहा हूँ सर। जी सर बोलिए। सर मेरे को सुन पा रहे हो क्या? हाँ सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर अपना एंटिटी का नाम है ईस्ट इंडिया IFSC प्राइवेट लिमिटेड। जी बोलिए। इसमें जो अप्लाई करना चाह रहे थे, इसमें आपसे बात भी हुई थी कि अपना ये का जो 5% जो है ना वो DC के ऑफिस से बैकएंड से होगा, बट ये अभी तक अपना ये अपने को अप्रूवल इसका मिला नहीं है 5 सर।
5 years का रिन्यूअल होता है आप। हाँ जी सर, इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है ना कि सर अपने डीसीपी जब फाइल करने जा रहे हैं तो डीसीपी फाइल करने के लिए अपने को इसमें ये कि एससीआरएफ का रिक्वेस्ट आईडी मांग रहा है और अपने एससीआरएफ फाइल नहीं किए हुए। अभिषेक हाँ हमारे साथ अभिषेक जी एनएसडीएल से देयर इज अभिषेक जी वो लेटर आ गया रिलैक्सेशन के लिए। नहीं है, विनाश बोल रहा हूँ। हेलो प्रकाश जी। हेलो वो एक डीसी साहब ने रिक्वेस्ट किया था फॉर आईएफएससी यूनिट को रिलैक्सेशन के लिए एससीआरएफ के लिए, वो आया कुछ एनी अपडेट ऑन दैट? I've got no update on that. Just give me 2 minutes. I'll just update you. Okay, fine. ठीक है। In the meantime, no, so we have not received any update on that. प्रकाश जी कुछ अपडेट नहीं मिला। प्रकाश जी जी सर, एफएमई के केस में लीज डीड ट्रस्ट और स्कीम मतलब दोनों का ही करना पड़ेगा, मतलब जो एफएमई एंटिटी होगा उसका और स्कीम होगा उसका दोनों का, या फिर कैसे होगा? मतलब एसईजेड यूनिट अगर आपने अप्रूवल लिया है दोनों का सेपरेट एलओए है तो सेपरेट लिस्ट डीड आएगा उसका कंप्लायंस में। ऑफिस एड्रेस तो सेम होगा वो चलेगा राइट? तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं। नहीं एड्रेस सेम होगा भी, लेकिन लीज डीड कौन सिग्नेचर साइन करेगा? बिकॉज डेवलपर तो एक ही बार करता है ना एफएमई के साथ। नहीं, बाद में देयर आर डेवलपर्स हु डू हैव एग्जीक्यूटेड लीज डीड, सो वो एफएमई का अंडर एसईजेड रेगुलेशन इट इज रिक्वायर्ड सर। Look, that's what, see, FME has signed a lease deed with a developer, but बाद में we have multiple funds, multiple trust रहता है, so उसका इंडिविजुअली कैसे कर सकते हैं वो लीज डीड because for the same office? वो को डेवलपर ही आपको सॉल्यूशन दे पाएगा सर। For that he is charging money, that is what is another problem. For the same office same deed। ओपन हाउस में आ जाइए कल। ओके रौनक भाई। प्रकाश जी मेरा नाम कोडी जतिन रावल है। हेलो प्रकाश जी, कैन आई स्पीक? हाँ सर बोलिए। जी सर। प्रकाश जी मेरा नाम जतिन रावल है, मैं अदानी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सॉरी आई जॉइन द कॉल इन बिटवीन, पर आई एम नॉट श्योर ये राइट प्लेटफॉर्म है कि नहीं। आई हैव 2 क्वेरीज सर। हम अभी हमारा अप्रूवल हो गया है सर एलओए का, अभी जो जनरेशन होना है वो बाकी है। जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है राइट, तो उसका अभी एलओए जनरेशन पेंडिंग है, तो कब तक हो सकता है सर? इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर कांटेक्ट नंबर्स अवेलेबल, तो उसमें आपके जो अल्फाबेटिकल है, पहले आप जॉर्ज सर को कॉल कर सकते हो। जॉर्ज सर का नंबर नहीं है इसमें, बट आई विल सेपरेटली गिव इट टू यू, एंड देन कंसर्न ओएसडी अल्फाबेटिकल वाइज है, आप उनको कॉल करके यू कैन गेट द डिटेल्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सर ये है, क्या उसके बाद हम इक्विटी ट्रांसफर करेंगे सर? ठीक है, इनिशियल इक्विटी। ओके, तो इनिशियल इक्विटी में सर जो हमको ऑथराइज डीलर बैंक जो है हमारा एक्सिस बैंक के हम थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, तो दे आर सेइंग दैट इवन द नॉमिनी शेयर होल्डर्स जो हमने रखे हैं उनको भी ये फॉर्म एफसी भर के देना है। सो नहीं सर, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। So then who will be the right person, sir? Can you guide or maybe give the name or number, sir? Let me check. आप मेरे को सेपरेटली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक करके आपको अपडेट करता हूँ सर। Okay, and the third question, the third question is also related to that only, sir. कि जब as per the ROC, ठीक है, कंपनी तो बन गया सर, पर अभी तक इक्विटी नहीं डाला है, तो ईडी बैंक अगेन इज सेइंग कि भी आपको ये लेट सबमिशन कर रहे हो आप, बिकॉज विद इन 30 डेज तो इक्विटी डाल देना होता है। Sir, it is So in linked that with case RBI also the query. ED bank is asking us कि भी आपको LSF भरना रहेगा। So sir, in any scenario, जब तक आप LOI नहीं देंगे तब तक तो पैसा डाल नहीं सकता हो, तो ये LSF थोड़ी गिना जाएगा सर। फॉर एलओए के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन कम एंड वी कैन हैव अ जॉइंट मीटिंग विद द डीसी, सॉरी चितन वर्मा जी हैं यहाँ पे। एलओए से कनेक्टेड ही सारी चीजें हैं सर ये। समझ गया। तो मैं किससे बात करूं सर? यू कैन कम डाउन, अभी आ जाओ, आप अपने डीसी ऑफिस में मिल लेते हैं, गिफ्ट हाउस के बाजू में आईसीटी गिफ्ट हाउस। अभी आ जाइए, वी कैन हैव अ मीटिंग विद द, वी कैन रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू इशू जल्दी। नहीं वो जल्दी कर लेंगे, बट ये जो 2 पॉइंट है सर, वो कौन मुझे जवाब देगा कि भाई नॉमिनी शेयर को तो क्या थोड़ी फाइल करना है सर? तो वन ऑफ द यूनिट विल बी एनीबॉडी यूनिट हु वांट्स टू आंसर दिस।
किसी को ऐसा ये फेस हुआ है सर? एनीबडी कैन हेल्प? This question is open to all. Any unit would like to answer the question? ठीक है, तो सर जी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आई चेक विद माय अदर डिपार्टमेंट्स एंड लेट यू नो, और अदरवाइज यू कैन कम ओपन हाउस में। आई थिंक ओपन हाउस में भी वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आपका, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं पूछ के बताता हूँ कंसर्न पर्सन से। हाँ, बिकॉज सर वी आर नाउ ऑलमोस्ट देयर, एंड अभी तो ये एडी बैंक इज आस्किंग सच क्वेश्चन कि नॉमिनी शेयर होल्डर को थोड़ी पैसा देना है सर, वो तो कंपनी को देना। प्रकाश जी, मैं जतिन के साथी हूँ। मैं आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द अदानी। इन द लास्ट ट्रेनिंग सेशन I have already raised this question. Today we got the mail from our consultant. Today our unit ID is already approved by the DC office. But still the DC office has not generated the LOA copy because of the आप मेरे को रिक्वेस्ट आईडी भेजिए, मैं डीसी ऑफिस में वो कर देता हूँ रिक्वेस्ट। ओके सर, बट सर योर नंबर इज नॉट अवेलेबल। हाँ, मैं जस्ट अ मिनट में आपको एक मिनट सर ये चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर। हाँ, मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स। सर और दूसरे 2 पॉइंट के लिए सर किससे बात करें? प्लीज शेयर दी पीटी पोस्ट। मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको पूछ के बताता हूँ। आई विल सेंड यू द डिटेल्स। ठीक है, तो ये कैसे करना है? ओके जी सर, मैं आपको करता हूँ। या थैंक यू, थैंक यू। Prakash, hi, this is भाई Carl नंबर here. ले ले जो ना साइड में। Prakash, could you please share this PPT with us? हेलो, वो चैट में डाल रहे हैं। Sir, Excel is available on the website. We will share you the link to download the compliance sheet. Prakash ji, I am having a quick question. जी। Actually, I'm Priya Rawal from View Trade International, and just I want to understand that we haven't received BLUT and EC certificate yet. It's actually been more than 2+ weeks. So, is there any update or to whom? हाँ, आनंद जी छुट्टी पे, तो now it will be processed. 7 days he was on leave. तो अभी एजेंडा में बिजी थे, अभी स्टार्ट हो जाएगा। ओएसडी आप नहीं, एक मिनट, आपका ओएसडी कौन है? नेम क्या, कंपनी का नाम क्या बताया? View Trade International. अल्फाबेट फर्स्ट आता है, अल्फाबेट क्या आपका? VIEW. V for आई थिंक विपुल भाई। विपुल जोशी। अच्छा, तो मैं आप मुझे भेज दीजिए आपका एक्नॉलेजमेंट, मैं सर को मिलके पूछ लेता हूँ, आप रिक्वेस्ट करूंगा अगर जल्दी कर देंगे। नहीं, वो यूजुअली कर देते हैं। लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। 2+ weeks, so I thought to ask you that if हाँ, मैं सी सर का नंबर भी अवेलेबल है। इफ यू कैन सी ऑन द वेबसाइट, तो सर का नंबर अवेलेबल है, डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो सर को। What's his good name? विपुल जोशी। Okay, Vipul Joshi. Okay. 9825690512। मैम आपका लास्ट स्टेटस क्या है SEZ ऑनलाइन में? लास्ट स्टेटस क्या बता रहा है आपका? नहीं, फिजिकल है, फिजिकल नहीं, फिर क्या मुझे ऐसा सजेशन बोला था वहां से SEZ ऑफिस में कि अगर फिजिकल सबमिट करते हैं पर आपको वो जो कवरिंग लेटर होता है एक्नॉलेज ड्यू वाला, वो आपको अपलोड करना है। फिर DC क्वेरी विल रेज द क्वेरी की डेफिशिएंसी, और फिर आपको जब भी अप्रूवल आती है तब उसमें वो रिस्पॉन्स देना पड़ता है। दैट इज हाउ इट गोस। नो, ऑनलाइन फाइलिंग बाद में, जब अप्रूव हो जाएगा तब आपको फाइल करना है। ओके, बॉन्ड, दिस इज फॉर बॉन्ड। इसी मैनुअल इशू होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा। Okay, So I would request Prakash, hi, this is Carl here. I just had one question regarding the LOA acceptance. So the LOA has already been provided, basis which the LUT also has been submitted, the eligibility certificate. Right. And all also has been submitted. Okay. We are in the process of generating the user IDs for the maker and the checker. Now for the checker, as a DSC is required, we are in the process of getting the DSC signature in place, which will take say maybe 7 to 8 days from our vendor. But we are continuously getting a reminder mail from a generic ID saying that your LOA acceptance is pending and would be expiring.
would be expiring on a Neeraj, you particular need to answer this question. Log in from your approver ID. Hello, sir. Akash, let me just explain. ਹਾਂਜੀ। So, Carl, you just have to log in from your approver ID. There's a link called acceptance of LOA, and from there, you using your DSC, you will have to accept that LOA. But I will require And the DSC email for that you're that, getting no? is an auto email. So, No, but do I require the DSC to provide acceptance of the LOA? yes, you will require your DSC to accept that LOA. Okay, so maybe because it is giving an auto-generated email saying that on the 3rd or the 4th of March it would expire. So even after that, will I be able to provide the acceptance on the online? That should not be a challenge. No. It will. I mean, it will stop you. Okay. So you will have to do it before that. Achha, I'll have to do it before that. But the LOA was received in the month of August. So why come the LOA is expiring in the month of March when it is a 1 year? The LOA is valid for 1 year, but you have to accept the LOA. Sorry, others, please go on mute, please. Yeah, if the others can go on mute. Can you tell me your unit name, please? IDFC First Bank. IDFC First Bank. So, okay. You drop an email to sezinfo, sezinfo@ndmail.com. We'll check. Okay, fine. Sure. But then you please try to get your DSC and accept it. Yeah. So we are pushing our vendor to get that urgently. Okay. Sure. Thank you. So, Prakash ji, this is regarding this BLUT. So on the portal, it is asking us to give us the bifurcation of the value in imported goods, import of services, indigenous services. Okay. So from the monitoring perspective, do we need to monitor from an individual header per se or a total per se, total duty amount? The amount of exemption, not the total amount has to be debited. The only exemption part. Suppose आपने 1 लाख का goods लिया and the amount. नहीं sir, वो नहीं question. For example, मैंने import of services में while doing the applications, I have mentioned duty amount as 100, right? And in the import of goods, I have mentioned. वो bifurcation नहीं है, online system में नहीं है. वो आपका internal है, how you want to monitor the same. But sir, portal pay, they are asking us to give us the bifurcation of each of the heads. But जब right, but वो individual हर एक सर्विस का अलग-अलग मॉनिटरिंग होता है, एक जनरल मॉनिटरिंग होता है. We also जैसे हमारा गिफ्ट SEZ लिमिटेड का हम एक जनरल मॉनिटरिंग रखते हैं. जैसे मैंने सर्विस का 1 लाख दिया, गुड्स का 1 लाख दिया, बट हम व्हाट वी डू इज टोटल 2 लाख का ही कंसीडर डेबिट करते चलते हैं. So I have to monitor at total level and not the individual header that I have submitted while doing the application. If you are able to do on individual basis service का अलग और goods का अलग, it is very good. The only question is that there might be chances that particular header might get exhausted, but my total amount is not exhausted. So do I need to find some additional amount, or system will stop you somewhere in between while ongoing reporting? So वो आपके ऊपर है. It is up to the unit how you can decide on your own. But it is advisable कि आप अलग रखो. जनरल रखो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एडिशनल बॉन्ड आपको खाली सबमिट करना है. क्योंकि एट द टाइम ऑफ इट इज अ प्रोजेक्शन, 5 साल का प्रोजेक्शन होता है. यू नेवर नो कि कौन सा एक्सीड हो जाएगा. सपोज अभी मैंने सर्विस का ज्यादा दिया, बट ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को एक हाई वैल्यू गुड्स लेना पड़े. तो सिस्टम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी तक आज तक मतलब किसी को ऐसा वो मना नहीं किया है. बट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज डिस्कस, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यूनिट. इट इज एडवाइजेबल कि आप इंडिविजुअल लेवल पे करो तो अच्छा है. सर्विस का अलग, गुड्स का अलग है, बट जनरल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी तक किसी को प्रॉब्लम आया नहीं. प्रकाश जी, एक क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेरी. BLUT जब हम एक्सेप्ट कर लेते, फिजिकली एक्सेप्ट रहता है डीसी की तरफ से, उसको अपलोड करना रहता है, करेक्ट? हाँ, ये करेक्ट. अपलोड करते वक्त एक्चुअली पोर्टल पूछता है कि यूनिट एड्रेस इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द SEZ यूनिट. तो अगेन नीरव जी ने ऑलरेडी आंसर कर दिया. लीज डीड फाइल करना है उसमें.
तो सर बीएलयूटी के एक्सेप्ट होने के बाद हमें टाइमलाइन कुछ है अपलोड करने के लिए, क्योंकि विदाउट उसके बाद ही हमें लीज डीड एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। नहीं, लीज डीड तो फिजिकल अलग है, वो तो अलग वो है। हाँ सर, वो ईसी तो मैन्युअली हो जाएगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मैन्युअली हो जाएगा, और आप लीज डीड भी स्टेट गवर्नमेंट का वो है, लीज डीड कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो कोई इशू नहीं है लीज डीड का। नहीं प्रकाश जी, हाँ, लीज डीड अगर एग्जीक्यूट पहले करेंगे तो फिर वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मांगेंगे वो लोग कि स्टैम्प ड्यूटी पे करो। डेवलपर का कहना ऐसा है कि स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपका बीएलयूटी और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको वो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, 5% अराउंड वो लग जाता है, 5% या 6% जैसे। एब्सोल्युटली राइट, आपको पहले फिजिकली बॉन्ड कर दीजिए, ईसी ले लीजिए एंड यू एग्जीक्यूट द लीज डीड। पैरेलली यू कैन अपलोड द सेम इन द एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो अभिषेक जी है, नीरव जी है, आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू गो अहेड। जैसे एड्रेस अपडेशन नहीं है मींस आपने लीज डीड फाइल नहीं किया है, तो पहले आपको लीज डीड वाला मतलब सॉरी, अच्छा हाँ लीज डीड वो हाँ प्रॉब्लम सर, आएगा ना। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जैसे हम अभिषेक जी कुछ physical accept सॉल्यूशन होते है? हैं। समझ गए, गॉट इट। अभिषेक जी, हाँ नीरव जी, एनीबडी फ्रॉम एनएसडीएल? अविनाश जी? सर बोलिए। अभी इनका ये है कि लीज डीड बॉन्ड लीज डीड हो गया, उसके बाद में देव उससे पहले अगर अपडेट करना है तो लीज डीड से पहले उनको अपडेट करना है तो एड्रेस अपडेशन तभी हो पाएगा जब लीज डीड फाइल होगा ऑनलाइन में, तो उसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए अविनाश जी। नहीं, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन द फर्स्ट वैलिडेशन इज लीज डीड ओनली ना। बिना बॉन्ड के तो कैसे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा ना, पहले बॉन्ड होगा फिर बाद में लीज डीड होगा। एक्चुअली प्रकाश जी, नहीं ना, जो पहले SEZ एड्रेस पोर्टल है पहले एड्रेस उसमें अपडेशन होता प्रोसेस है, के बाद साथ। में So I would suggest you to come up with this suggestion in the open house. रोनक जी आपको लिंक दे देंगे. We can request the DC office to relax the same for IFSC units. All units. I am not IFSC for all units. Okay, thank you. नहीं, प्रकाश जी, can you elaborate कि where the issue was? उसमें क्या होता है सर कि जब SEZ ऑनलाइन में LUT अपलोड करने जाते हैं तो वो सिस्टम बोलता है कि पहले एड्रेस अपडेट करो. एड्रेस का अपडेट कब तभी हो पाएगा जब वो लीज डीड के लिए वो फाइल करेगा, गुजरात का यहाँ का प्रीमाइसेस का एड्रेस डालेगा, तभी वो लीज डीड के अंदर जो एड्रेस डालेगा तभी वो 24 कोड एक्टिवेट होगा. पिन कोड यहाँ पे गुजरात का डालेगा, 24 कोड एनेबल होगा और फिर GST नंबर अपडेट होगा, फिर वो सिस्टम उसको कोई भी ट्रांजेक्शन फाइल करने देगा. तो जब तक वो सॉरी एड्रेस कोड पिन कोड गुजरात का यहाँ पे नहीं डालेगा सिस्टम में अंदर, the system will not allow will not allow them to file any transaction. That is correct. तो लीज डीड की बेसिस पे उनको GST मिलता है ना? नहीं, यहाँ पे मैनी यूनिट्स है जो एलओए नॉर्मल एलओए और ईसी के बेस पे जीएसटी ले लेते हैं, क्योंकि लीज डीड अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो दे हैव टू पे द जीएसटी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा ना, पहले बॉन्ड होगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. ओके, कल ओपन हाउस is scheduled at 2 o'clock, तो ये this can be discussed. Prakash sir, this is Jivita from Aravat Capital. We recently shifted the premises to a new location and we have submitted the BLUT. Earlier we used to get this acceptance letter through email, but this time we just got a confirmation via email, but there is no acceptance letter attached to it. When one of our consultant checked with your office, they mentioned that it will be uploaded in the SEZ portal, but we're not able to see any such acceptance letter in the portal. So acceptance, LOA acceptance pending है तो approval में जाके you can file the same. BLUT sir, BLUT acceptance. अच्छा, acceptance BLUT फाइल नहीं तो उसके बिना तो सिस्टम आपको कोई फाइल ही नहीं करने देगा. अगर न्यू LUT नहीं है तो सिस्टम आगे काम बढ़ने ही नहीं देगा.
No, we have submitted the BLUT originals to your office. We got a email Physical. confirmation has been, yeah, just a confirmation that it has been accepted. So earlier used to give a acceptance letter, right? Like which used to get attached in the email. तो आपने फिजिकल बॉन्ड कर दिया, ईसी ले लिया, राइट? नाउ एसईजेड ऑनलाइन के अंदर अपलोड करना है, दैट इज व्हाट यू वांट टू से? Correct, but we haven't received the acceptance letter for that, for the BLUT. अच्छा, मेल नहीं आया आपको? ओके फाइन। हाँ, मेल में नहीं आया। हाँ, ओके। तो ओपन हाउस में कल 2 बजे ज्वाइन हो जाइए। यू कैन रिक्वेस्ट, देयर इज सम प्रॉब्लम विद एनआईसी, उनके ईमेल जो गवर्नमेंट ईमेल एड्रेस से जाते हैं ना, तो कुछ इशू है। तो अगेन आप ये पॉइंट रेज करते हैं ओपन हाउस में कि वी आर नॉट गेटिंग द ईमेल एड्रेस, तो रिक्वेस्टिंग टू बी, आप रिक्वेस्ट कर दीजिए तो आपको सेंड कर देंगे, रीसेंड कर देंगे वो। तो ओपन हाउस ऑनलाइन है, उसका लिंक रौनक जी दे देंगे आपको। रौनक जी से आप लिंक ले लीजिए। Okay. One more question, sir. This is again regarding to one of our units in SEZ. We haven't received the commencement letter yet. We started the business last July 2013, and we submitted the required documents to your office within a month or so. We have sent certain follow-up emails, but we haven't got any responses so far. हाँ, तो आपके जो कंसर्न ओएसडी है उनको कॉल कर लीजिए। डिस्प्ले उनके कांटेक्ट नंबर सबके अवेलेबल है वेबसाइट पे, ये स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली उनको कॉल करके पूछ सकते हो। OSD, right? The one, the designation OSD अल्फाबेटिकल के हिसाब से। आपका कंपनी का नाम क्या है? Airavate Capital, Airavate. ए राजन जी हैं, राजन परमार जी हैं। Okay, sir, got it. Thank you. सर, चेंजेस इन डायरेक्टर्स डेटा पोर्टल पे अपलोड करना है कि इट इज फिजिकली लेटर सबमिशन इज रिक्वायर्ड? ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, फ्री फॉर्म फाइल करना है उसका। हमारा मोबाइल नंबर ओके 96 388 4343। ओके, मैंने रौनक जी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। एनीबडी जिसको ओपन हाउस का लिंक चाहिए डायरेक्टली कॉल करके उनसे ले सकता है। अच्छा, लिंक शेयर कर दो, चैट बॉक्स में शेयर कर दो ना, चैट बॉक्स में नाख दो लिंक ओपन हाउस में। हाँ मैम बोलिए। No, sir, I wanted the WhatsApp group link. I got it in the chat. Thank you. हाँ, ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट अविनाश जी टू 2 बजे आप भी ज्वाइन हो जाइएगा ओपन हाउस में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। हेलो, कल 2 बजे ओपन हाउस में कैन यू ज्वाइन, ऐसे पूछ रहा था। I'll see, sir. ओके फाइन, थैंक यू। मैंने तो नीरज सर वन लास्ट क्वेश्चन, ये जो फ्री फॉर्म वाला आपने बताया ना, वो कहाँ से होता है सर एग्जैक्ट? मेकर आईडी से होता है। मेकर आईडी में आपको एप्लीकेशंस में दिखेगा, एप्लीकेशन द फ्री फॉर्म इज जस्ट अ टर्म, लिंक है एप्लीकेशन, या द लिंक नेम इज एप्लीकेशन। ओके। जो मेकर आईडी में एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे ना, उसको फ्री फॉर्म बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी फ्री फॉर्म यूज किया गया है, बट जब आप लॉगिन करोगे मेकर आईडी में तो एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, दैट इज फ्री फॉर्म। Okay, thank you. So, sir, for submission of change in directors data, in the drop down, what we have to select in the application drop down? Do we need to select others because we are not able to find नहीं, some उसमें suitable है, option? उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट द चेंज इन एंटरप्रेन्योर का कुछ मॉड्यूल है। आप लॉगिन करेंगे तो यू कैन कॉल मी, मैं आपको बता दूंगा उसमें। हाँ, उसमें सर 3 ऑप्शन आते हैं फॉर्म टाइप में, एडमिन, कस्टम्स एंड ग्रेवियंस। ऐसा फाइन, अभी आप फर्स्ट स्टेप पे हो, पहले एडमिन सिलेक्ट करना, फिर बाद में अदर ऑप्शंस ओपन होंगे। Sir, in the other options only, if we select the admin and then under application on directors intimation, what we need to select? There is one option, unit intimation of DCP. वो कमेंसमेंट के लिए है। वो तो कमेंसमेंट वाला है। Okay. हाँ, और कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आपको? कमेंसमेंट कर दो तभी वो अपडेट होता है, फाइल कर सकते हो। Sir, I can share the screen if you want. Please share your screen. Yeah, sure.
change in entrepreneur or shareholding pattern. This one. प्रकाश जी अरे सॉरी म्यूट हो गया था. चेंज इन एंटरप्रेन्योर, हाँ बस वही. For directors change intimation we need to use this as a free form only. हाँ जी. So अभी जो हाँ इंटीमेशन ऑफ डीसीपी है दैट इज फॉर कमेंसमेंट. आईजीएसटी वाला मॉड्यूल. अरे अभिषेक अविनाश जी हाँ प्रकाश जी बोले. अरे इसमें फॉर्म आई वाला आ रहा है तो कैन यू मतलब वो रिमूव होने वाला है कि नहीं होने वाला? फॉर्म आई तो कब का बंद हो गया? जीएसटी सबजुम हो गया सब पूरा सीए सेंट्रल जीएस टैक्स वाला. हाँ वो चेंज निकालने का ये किया हम लोगों ने. हाँ बिकॉज आईसीपी अभी नहीं है. आईसीपी अलग भी पोर्टल हो गया, डीजीएफटी से होगा, एसईजेड ऑनलाइन से नहीं होता है. ठीक है कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता. પ્રકાશ સર હા હું શું કહું છું, આપણે જે સ્ક્રીન હા हाँ આપણે જે સ્ક્રીન દેખાડી ને એમાં ચેન્જ ઓફ એન્ટરપ્રેન્યોર ઓર શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન, તો આઈ થિંક એ પ્રોમોટર ચેન્જ ઇન પ્રોમોટર હોય ને એના માટે છે, ડિરેક્ટર ની કારણે હોય. એ ડિરેક્ટર માટે તો એમને અધર્સ માં જ જવું પડશે. हाँ अविनाश जी वुड यू लाइक टू आंसर? અવિનાશ जी हाँ बोलिए. Yeah, the guy who shared the screen, he was pointing out about the change in director. So the question is whether to select a change in entrepreneur or sharing pattern, or it would be under others form. Because in my view, change in entrepreneur or shareholding pattern would be tantamount to, I think, change in the ownership, the change in ownership structure. And director can be a owner as well as cannot be a owner as well. It should be under other form only. I will confirm, Rajiv ji, I will confirm. You take it up with the DC office. I'm not sure about this. Fine. So entrepreneur, if you see the definition of entrepreneur, तो director के अंदर वो cover हो जाता है. So even though we entrepreneur is linked with the promoter or the shareholder only. Yeah. So director can be a shareholder as well as there cannot be a shareholder as well. Director can be, I think, employee in the employment as well. Fine. So just drop me a WhatsApp. I'll confirm the same and let you know. Okay. Yeah. Prakash ji, Ravi Thakkar here from the ITI, the Investment Trust of India. So thing is that कि हमने ना commencement certificate commencement के लिए हमने फाइल किया है free form में under unit intimation of DCP, right? But वहाँ पे they are asking for request ID, correct? Right. और technically हमारा invoice वगैरह कुछ generate हुआ नहीं है and we don't have any request ID, right? Again, I would request, जैसे मैंने दूसरों को बोला, आप ओपन हाउस का लिंक मैंने शेयर कर दिया, रोनक जी का नंबर भी शेयर कर दिया है. 2 बजे कल आप इवेंट रिक्वेस्ट फॉर रिलैक्सेशन ऑफ सेम इन द ओपन हाउस, एप्लीकेबल टू ऑल यूनिट. जो जिसको भी इशू आ रहा है, द यूनिट्स कैन join in the online mode and represent the same for relaxation of the same. तो मतलब रिलैक्सेशन इन द सेंस कि हम लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, फिजिकल सबमिट करेंगे, राइट? नहीं, डीसी साहब ने ऐसा बोला था लास्ट ओपन हाउस में कि एनएसडीएल को वो लिखेंगे टू रिलैक्स द, तो जो एससीआरएफ का रिक्वेस्ट आईडी है वो निकालने के लिए, ऑप्शनल करने के लिए. ओके. तो एनएसडीएल ने अभी तक कुछ किया है नहीं अपडेट फ्रॉम एनएसडीएल, इफ यू हैव एनी आइडिया? अविनाश जी ने अब थोड़ी देर पहले ही बताया कि अभी अपडेट नहीं है. अभी डीसी से कुछ इंटीमेशन नहीं आया तो डीसी ऑफिस ने अभी वो उनको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट नहीं किया रिलैक्सेशन फॉर एससीआरएफ, हाँ रिक्वेस्ट आईडी को ऑप्शनल करने के लिए. ओके ठीक है, यस इन टुमारो मीटिंग. या थैंक्स. या so I have another meeting scheduled. We can reschedule again. We can have another compliance training तो नहीं बोलेंगे, it is a learning session. So we can schedule another learning session in the next upcoming time. We will interview shortly. आपको जल्दी बता देंगे. So we end the session over here. Thank you all. Thank you, Prakash bhai. Thank you very much. Thank you, Prakash ji. Thank you, Prakash ji. Thank you. Thank you, sir. You may please log off. Thank you. Thank you, sir.
you.